ब्रेक तो बाद तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है। नैरोबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। And like all my friends here said, that it's a struggle for a woman, because not only does she have to fight the men who don't really let her get there, and once she gets there, they use all kind of means to make sure that they can remove her from there unless she is pliable and the kind that plays to the galleries the way they would like them to. But things are changing, and I think in every country one thing is constant, that the number of women participation is increasing, because at the end of the day, when the world population, we are half of the population, we are half of the democracy of every country, there is nothing that can really stop us from getting ahead. Yes, it's happening very slowly, but the fact that all of us are here shows that it is changing, and that fight, I think we as women are used to fighting right from the time that we take birth, because I come from a country where the women, the disparity between the male and the female gender is so great that female feticide is something that is faced right from the womb. So you can imagine the extent to which we have to fight to get equal share and equal status in everything, in spite of the fact that our constitution enshrines equality to women, and like I mentioned earlier, even to the extent that if you have to discriminate in favor of women. Like my colleague here asked me that in this standing committee that my country has for women empowerment, yes, definitely the representation of women is much more, but because all policies that are recommended by this committee eventually go to the concerned ministries, which are usually headed by most of the men, because it's to make them socially and economically more empowered. These ministries are headed by men. So the policies that are made are usually a core group of women, but there is men participation. The women is much more, because I think we relate to women issues much more than probably the men have an interest in them. But then in the rule of the committee is that these policies have to be taken into consideration. Whatever these committees recommend have to be taken into consideration at the policy level making level. And that level, be it headed by the finance minister or the economic section, whichever section, these are taken into consideration, and that's how these policies have come about and these committees have come about. So maybe indirectly, but yes, it's the men who have helped bring these committees around. And I think what's right is that it's the women who understand the issues, greater depth, have been through it. Maybe that's the reason why it's represented more by the women, but yes, there are also men in it. जो अज का एक अहम मुद्दा जो विचारिया जाना पीडीसी प्राइम दे विच मुद्दा है कई थावां दे उत्ते जबरदस्ती की जा रही, अक्वायर की जा रही जमीन का मुद्दा, और इस दे विच की कहंदे ने साडे माहिर इस वाल असीं तुहानूं लैके चलांगे। इस तों पहलों दस दईए कि अज इस मुद्दे दे संबंधी एक खास फैसला भी होया। मुख्यमंत्री दे दखल तो बाद जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दा अपने गुआंढ दे 4 पिंडां दे 386 एकड़ जमीन ते कॉलोनी वसाउण दा सुपना अज खत्म होया। इन्हां पिंडां दे वासियां कीनिया में हो रही दूजी कामनवैल्थ वूमेन पार्लीमेंटेरियन कांफ्रेंस में हिस्सा लै रहे एमपी हरसिमरत कौर बादल ने अज चर्चावां दौरान फैसले लैण की प्रक्रिया च औरतां की शमूलीयत वधाउण वास्ते रणनीति बनाउण ते जोर दिता है। उन्होंने आख्या कि औरतां दे विकास लई वित्ती नीतियां उलीकण दे नाल-नाल लिंग पक्षपाती कानूनां दे विच सुधार होना जरूरी है। नाल ही औरतां च सिक्ख्या दे पद्धर नूं वधाउण दे लई होर कोशिशां कीतीआं जाणीआं चाहीदिआं ने। उन्होंने भी आख्या कि सरकारां नूं औरतां दी बराबरी ते ताकत वास्ते मुद्दे नूं तरजीह देनी चाहीदी है। इस लिए कौमी बजट दे विच ढुकवीं रकम जारी की जानी चाहिए ते इसकी सही वरतों नूं यकीनी बनाना भी जरूरी है। हरसिमरत कौर ने आख्या कि संविधान च लिंग समानता तो इलावा कौमी महिला कमीशन की स्थापना, औरतां दे ताकत बारे सांझी संसदी स्टैंडिंग कमेटी का गठन ते औरतां दे सशक्तिकरण बारे कौमी कमीशन दी शुरुआत जिहे कदमां ने फैसला लैण दी प्रक्रिया च औरतां दी शमूलीयत का आधार बनिया है। अपने संबोधन च उन्हां औरतां दी 33% प्रतिनिधिता नूं पक्किआं करदी संविधान की 73वीं ते 74वीं सोध नूं इतिहासक दस्सिआ ते नाल ही यह भी आख्या है कि औरतों की बौद्धिक समर्था, वोट शक्ति
ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਬਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ